So hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, we are going to discuss a two important event that has actually recently happened, and we will discuss things around it. The first is the Uttarakhand Avalanche that has been in the news in the last 2-3 days. Then another one is Telangana tunnel collapse. This is in the news for the past 10-11 days, and this is also very important. So we will discuss things related with that and the GK and current affairs questions that can be asked from these two topics. So what are the important things related? For example, Uttarakhand avalanche has happened in which city? Okay. So what are the things associated with that? What is National Disaster Response Force, NDMA? Because these all are in the news: National Disaster Management Authority, National Disaster Response Force. Then when we are talking about Telangana tunnel collapse, what is the name of the project under which inside which this incident happened? What is the name of the river? Okay. In which state it lies? What are the problems? What are the solutions? What are the agencies involved in it? So उससे related आसपास की सारी चीजें पूछी जा सकती हैं because these are in the news. Okay, and that is why I have decided to take these two topics in this class. So am I audible, visible? Everything is fine? Is my voice reaching? If everything is fine, please write yes in the comments. Okay. Before that, guys, there's a small announcement before moving on. Please go to our channel, subscribe to our channel, go to the live section. We have done Oscar class. This is very important. If you have not watched the class, I would suggest please watch it. This will be important in every exam, wherever GK or current affairs is asked. So Oscars are very important. What we call it as Academy Awards also. So yesterday I have done a class where I have discussed all important comprehensive questions related with Oscar. So please go and watch it. That would be very beneficial. So let us begin with. So this was the news trending yesterday and today. That last missing worker's body found, death toll rises to 8. So basically, what has happened was, unfortunately, the avalanche happened in Uttarakhand, Chamoli district, where actually 8 people belonging to BRO, Border Roads Organization, died. Now, please tell me in the comment section. देखो इसी से question बनता है जैसे Border Roads Organization. So this organization works under which ministry? Please tell me. And who is the minister? So this avalanche, I hope you are aware. Let's say this is a mountain peak. So a big chunk of the land moves down, and what we call it as landslides or avalanche. And people here can be easily buried by this avalanche. So that is what you should be knowing about it. So recently, the avalanche happened in the Chamoli district of Uttarakhand, and 8 people have died. So workers body लिख रहे हैं. So ये worker वही BRO के workers थे, Border Roads Organization के. Yes, Natasha, you're right. It is under Ministry of Defense, Border Roads Organization. We had discussed in the last class also that it is under Ministry of Defense. And who is the Defense Minister of India? Who is the Defense Minister? I hope you should be knowing it. And Mr. Rajnath Singh is the Defense Minister of India. So the death toll in the avalanche that hit near Mana village in Chamoli district of Uttarakhand has reached to 8. That is what on Sunday after last missing person's body was found. So that was in the news on Sunday. Yes, Mr. Rajnath Singh is the Defense Minister. Natasha, you're right. Very good. So the last missing person's body has been found. All the 54 persons have been rescued, recovered. So बाकी जो 54 person है उनको rescue recover कर लिया गया है ना. So that is what is being talked. So rescue operation, Lieutenant Colonel Manish Srivastav, PRO Defense Dehradun, said this. Okay. So the agencies which were involved is Indian Army, then Air Force. I hope you are aware of these two. Then ITBP. ITBP मैंने आपको बताया था. This is ITBP. This is the dress of ITBP, Indo-Tibetan Border Police. This is one of the example of CAPF, Central Armed Police Force. ठीक है. Central Armed Police Force. So ITBP और भी होता है जैसे BSF है ना. Then we have CRPF, we have CISF. These all are examples of CAPF, Central Armed Police Force. And here the answer is ITBP, okay, Indo-Tibetan Border Police. This was also involved because I have told you that ITBP is actually primarily posted in these regions, in Uttarakhand,
Himachal Pradesh, Ladakh region में आपको you will find in the bordering areas with China or with Tibet, you will find ITBP posted. So that is why ITBP was also involved in that. Then we have NDRF, ये मैंने बताया है, National Disaster Response Force. This is formed under National Disaster Management Authority, है ना? And State Disaster Response Force is at state level, but NDRF is at national level. And this NDRF is also very prominent. Like you must have seen these orange color dress people, है ना? So these all are NDRF. देखो उनके कंधे पे लिखा हुआ भी है ना, NDRF. So in fact, this is an image where they were sent 2 years back. We had seen like Operation Dost, where India sent NDRF people to Turkey because Turkey had witnessed earthquake. Okay, so that is what you should be knowing. So there also NDRF personnel were sent. So NDRF is primarily involved wherever you will see disaster. They are specifically, this is a special force made to combat disaster. खास करके एक अलग force बनाई गई है disaster combat करने के लिए, to fight against the disaster. And that is what you should be knowing, National Disaster Response Force. ठीक है? And of course, it works under the guideline of NDMA, National Disaster Management Authority, who is headed by Honorable Prime Minister. ठीक है? तो ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए. So these are the things. यही सब क्वेश्चन आएगा कि avalanche हुआ तो NDRF क्या है, so NDRF कब बना, क्या बना, कौन सी, है ना? So National Disaster Response Force is a specialized force tasked with the responsibility of fighting natural and man-made disaster, है ना? It operates under National Disaster Management Authority of Home Ministry. So this is what you should be knowing. उनके हेड जो होते हैं वो IPS ऑफिसर्स होते हैं, डायरेक्टर जनरल, IG, DIGs are IPS officers. ठीक है? So this you should be knowing about. Okay, so let me show where exactly the avalanche happened. अच्छा, मैंने आपको बताया है, again I will discuss that this region of India is quite prone to earthquake prone. Why this region is prone to earthquake? And since there is a earthquake prone, and that is why the chances, और यहाँ पर पूरी पहाड़ी area, all these are actually mountainous region. So when a mountainous region is prone to earthquake, the chances of avalanche or landslide is high. कोई भी ऐसी पहाड़ी एरिया जहां पर earthquake आने का चांस ज्यादा हो, तो वहां पर जाहिर सी बात है avalanche और landslide ज्यादा आएगा. But why is this region earthquake prone? So I'll give you an example. देखो मैं आपको बताता हूँ. We are having Western Ghat भी जो है ना, that is also mountainous region, but that is less prone to avalanche. Western Ghat जो नीचे है महाराष्ट्र में है ना, इस region में ना, you'll find Western Ghat. But these are, even though they are mountains, but they are less prone to avalanches. However, this region, the Himalayan region, is more prone to avalanches. What is the reason? So you can say the reason is, sir, earthquake prone region. Yes, it is true that this region is earthquake prone, but why? We had discussed it in earlier classes. इस region में avalanche, आपने सुना होगा हिमाचल में, उत्तराखंड में बहुत avalanche आता है ना. You must have heard in these regions. So why? Because I had discussed it in earlier classes that this is earthquake prone. So first of all, this is mountainous region. And the second is it is earthquake prone. And that is why these two together will lead to avalanches or landslides. Okay. तो यहाँ पर avalanche और landslides आने का चांस है. तो यहाँ पर earthquake prone क्यों है? Because of tectonic movement, है ना? We will discuss it. Young fold mountains. I will again explain. Because Himalayas are young fold mountains, still the tectonic plates are moving. And that is why this region is actually seismically active. Seismically active means the plates are still moving and the chances of earthquake is very high in this region. That is why you must have heard Nepal में अक्सर earthquake आता है ना? Because of this region. So basically, currently we are talking about this Uttarakhand. So this is, let me zoom it. So this is the state of Uttarakhand. This is Uttarakhand. And this is Dehradun. And इसके बगल में यहाँ पर है. This is actually you will find this Chamoli district. Okay, where this unfortunate incident happened. Okay, since we are talking about Border Roads Organization and the personnel, actually the 8 personnel who died were actually primarily belonging to BRO. So Border Roads Organization is a statutory body
and it is under Ministry of Defense. ठीक है. It develops and maintain road networks in India's bordering areas and friendly neighboring areas. ठीक है. तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम है पहाड़ी एरिया में रोड्स बनाना. जैसे ये सब रीजन में, लद्दाख रीजन हुआ, कश्मीर रीजन हुआ, हिमाचल, Uttarakhand, Sikkim, Arunachal. So in these regions, they make roads, road construction. And why this is a military wing? Because of course it has strategic connotation, है ना? So it has some strategic link because when a BRO is making roads in these areas, bordering areas, these have to be made in accordance with the requirement of military. ऐसे रोड बनाना है जिससे मिलिट्री को बेनिफिट हो, है ना, मतलब मिलिट्री का स्ट्रेटेजिक पर्पस सर्व हो. So that is why a border roads organization is under defense ministry and it is considered as you can say sort of a part of military. ठीक है. तो ये आपको पता होना चाहिए. जैसे यहाँ पर है लद्दाख वाला रीजन हो गया. आपने सुना होगा बहुत सारे जैसे टनल्स बनते हैं ना, सोनमार्ग टनल्स, जोजिला पास, रोहतांग पास. Many of these passes are actually made with the help of BRO. Many of the projects, many of the roads in these regions are made with the initiative of border roads organization. ठीक है. तो ये बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ही वाले यहाँ पे रोड बना रहे, कंस्ट्रक्शन में कुछ काम कर रहे होंगे, these staffs actually, and they unfortunately met with an accident and they died. So this you should be knowing. And officers of border roads organization comes from engineering services also. ठीक है. So ये आपको पता होना चाहिए. The director general is Lieutenant General Raghu Srinivasan. This is what you should be knowing about. देख रहे हो, Lieutenant General यानी he is actually an army officer who is the head of BRO. And this is the logo or of BRO. आप देख सकते हो the flag and logo of BRO. Okay, है ना. BRO consists of border roads wing under Defense Ministry and General Reserve Engineering Force, and they are selected from officers. Engineering service officers are also selected in this. So ये तो अभी 4 BRO वर्कर्स था. ये थोड़ी सी पुरानी न्यूज है, but now the news came कि 8 people died and all. इसमें अगर आप देखोगे, है ना, we have discussed, है ना. So they were likely trapped under 6 feet of ice as a night fell on Saturday. Saturday को रात में ये इंसिडेंट हुआ. On the second day of rescue operation taking place amidst heavy snowfall, और of course snowfall की वजह से भी avalanche होगा, because I hope you are aware, अगर पहाड़ी है और यहाँ पे snowfall होगा, so what will happen? तो यहाँ पे जो स्नो का जो ये है पत्थर जो बन गया, the rock that can move slippery, है ना, it becomes, so snowfall makes it lubricant, है ना, and it causes more avalanche. तो snowfalls एक तो रीजन है earthquake की वजह से. earthquake होगा, ये जमीन हिलेगी, थोड़ा सा भी small amount of seismicity can cause avalanche. Another reason is snowfalls, because when snowfall happens, it causes more lubricating effect, है ना, स्लिपरी हो जाता है, तो पहाड़ जो पत्थर है वो स्मूथली फिसल जाएगा बहुत आसानी से. So that is also one of the reason why actually the avalanche happens in this region. Okay, so 17 workers were brought out of the army and IDTBB, but 4 of them succumbed. इसमें the 4 दिखा रहे, but later on Hindustan Times के आर्टिकल के हिसाब से 8 हो गए. 8 people have total died and all. So that is what you should be knowing. इसमें है ना. So this is the Mana village in Chamoli district where this incident happened. Indian Air Force also plans to airlift a drone-based intelligent buried detection. So Indian Air Force was also involved in rescue operation and all. Okay. So that is what you should be knowing. And can you please tell me, since we are talking about Uttarakhand, who is the Chief Minister of Uttarakhand? Please tell me. Who is the Chief Minister of Uttarakhand? This you should be knowing. The capital of Uttarakhand is Dehradun. And the Chief Minister is Mr. Pushkar Singh Dhami. So Mr. Pushkar Dhami or Mr. Pushkar Singh Dhami, he also reached the Mana village in Chamoli district where this unfortunate incident happened. This is what you should be knowing about. Khair. Since we are talking something about seismology, earthquake and all, so कुछ questions मैं पूछ रहा हूँ, because we had discussed earlier also, so I believe that you should be answering it. National Center for Seismology. This is our organization which have all the data regarding earthquakes and all in India. So it is under which ministry? Please tell me. We have discussed earlier also when we had discussed the earthquakes. So I believe you should be knowing. The right answer is, what is the right answer? The right answer is option B, Ministry of Earth Sciences. Okay. So, and who is the Minister of Earth Sciences? Mr. Jitendra Singh, Mr. Mansukh Mandavia, Mr. Shivraj Singh Chauhan, Mr. Raju Ram Meghwal. So the answer is Mr. Jitendra Singh.
देखो मैंने खास के पूरा सेपरेट, जस्ट गो टू आवर यूट्यूब चैनल एंड लाइव सेक्शन में जाना, आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन मिनिस्टर्स एंड मिनिस्ट्रीज, तो ये जरूर जाके देख लीजिएगा, दैट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। ठीक है, सो उसमें मैंने बताया व्हाट इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट, व्हाट इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, दीज थिंग्स आई हैव डिस्कस्ड इन दैट क्लास। ठीक है, सो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, बोथ आर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, दिस यू शुड बी नोइंग अबाउट, है ना। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट अर्थक्वेक्स एंड ऑल, तो मैंने ये बताया भी था कि प्लेट बाउंड्रीज पे अर्थक्वेक आती है, तो देखो ये सब प्लेट्स, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडियन प्लेट है ना, अरबियन प्लेट, तो अगर आप देखोगे इंडियन प्लेट का ये वाला रीजन वही हिमालयन वाला रीजन है ना, गौर से देखो, दिस इज द हिमालयन रीजन। ठीक है, इंडियन प्लेट के नॉर्थ में, ओके, विच एक्चुअली फॉर्म्स प्लेट बाउंड्रीज। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई वी विटनेस मोर अर्थक्वेक्स इन हिमालयन रीजन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया भी था, दिस वी हैड डिस्कस्ड इट अर्लियर एज वेल, दैट almost 200 million years ago there was one land, this land was called as Pangea, and over a period of time this land got divided into Laurasia and Gondwana land। ठीक है, और इस गोंडवाना लैंड में से एक इंडिया यहाँ से निकला, which went and hit there the Laurasia। ठीक है, जिसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहते हैं, which is given by Alfred Wegener, and because of which जो मैंने आपको बताया था, है ना, यहाँ से है ना, इंडियन लैंड मास मूव्स वेंट एंड इट हिट द यूरेशियन प्लेट। ठीक है, तो यहाँ पर दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन। ये पूछा एग्जाम में क्वेश्चन, है ना, व्हाट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन, सो द आंसर इज हिमालयाज। ठीक है, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग। और ये ऑफ कोर्स कॉन्टिनेंटल प्लेट बाउंड्रीज के मध्य से बनता है, यानी एक प्लेट आया, one plate hit the another plate and this leads to the formation of mountain, this is called as young fold mountain, है ना, fold mountain कहते हैं, and if it is young like the Himalayas are considered as young, so that is why it is young fold mountain। So when the two plates, converging plates come hit each other, both are actually convergent, मतलब दोनों एक दूसरे के आस सामने आके हिट कर रहे हैं, and this leads to the formation of fold mountains, and one of the best example is Himalayas are an example of fold mountains, and they are very young, hardly 10 million years ago, है ना, hardly आप देख सकते हो 70 million years ago यहाँ पे था, 55 million years ago यहाँ था, यहाँ पे हिट करके यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, so almost around 10 million years ago we have seen formation of Himalayas, that is why these are considered as comparatively young। ठीक है, आप देख सकते हो यही ना है प्लेट बाउंड्री पर, इसीलिए मैंने कहा था कि देखो वेस्टर्न घाट यहाँ पर है, वी हैव वेस्टर्न घाट, बट वेस्टर्न घाट में उतना एवलांचेस नहीं आता है, एंड ईस्टर्न घाट में भी आल्सो वी हैव लेस एवलांचेस। ठीक है, one of the reason is because Himalayas are the place where there is plate boundaries, still there is movement is here, still आपको पता है ये प्लेट बाउंड्री, ये जो प्लेट है ना, ये ऐसे पुश कर रहा है इधर अभी भी still, and still Himalayas are rising, तो of course यहाँ पर जो है प्लेट बाउंड्रीज बनेगी, of course यहाँ पर there will be chances of high chances of earthquakes and all, and because of which we always witnesses some sort of earthquakes, avalanches, landslides etc। इसीलिए इस रीजन में ज्यादा आपने देखा होगा कि avalanche माउंटेन्स avalanches आते हैं, हालांकि माउंटेन्स तो यहाँ पे भी वेस्टर्न घाट पे भी है, बट वेस्टर्न घाट्स हैव कंपैरेटिवली लेस एंड इवन ईस्टर्न घाट्स हैव कंपैरेटिवली लेस एक्चुअली avalanches। ठीक है, तो उसकी वजह ये पहली बात तो ये कि हिमालयाज है, तो यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है स्टिल ये जो पूरा ये है ना, ये स्टिल इट्स मूविंग हियर, इंडियन प्लेट इज हिटिंग द तिब्बत। ठीक है, ग्रेजुअली, so that is why this region is quite seismically active। ये मैंने आपको दिखाया भी था, still remember कि देखो ये zone 5 है earthquake का, तो these are zones of earthquake, रेड वाला आप देखो, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो ये उत्तराखंड है ना, ये zone 5, फिर यहाँ पे हिमाचल है, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर है, और ये बिहार का नॉर्थ बिहार है, सो यू कैन सी नॉर्थ बिहार में भी काफी earthquake होता है, और पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। बाकी थोड़ा सा यहाँ पे भुज वाले रीजन, गुजरात के भुज रीजन में, बाकी देखो नीचे में रेड जोन नहीं है, देखो यहाँ पे भी माउंटेन रेंज है ना, यहाँ पे मैंने आपको बताया वेस्टर्न घाट इज आल्सो देयर, बट वेस्टर्न घाट विटनेसेस कंपैरेटिवली लेस avalanches because they are less earthquake prone। सिमिलरली ईस्टर्न घाट में भी कम आता है earthquakes, ये लैंडस्लाइड्स, लेकिन नॉर्थ इंडिया में आपने काफी सुना होगा earthquakes, है ना, जैसे आपने सिक्किम वगैरह बिहार में यहाँ सुना होगा, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर में, यू मस्ट हैव सीन नॉर्थ ईस्ट में। दिस इज द रीजन बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ the plate boundaries which are still moving। ठीक है, आप देख सकते हो, है ना।
रिंग ऑफ फायर मैंने आपको बताया था कि ये भी जो है बाउंड्रीज में यहाँ पर मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स हैपन, 90% ऑफ द वर्ल्ड्स अर्थक्वेक हैपन इन दिस रीजन, रिंग ऑफ फायर में, ठीक है। Now let us talk about Telangana tunnel collapse. This is also very much in the news. And इससे related जितने भी चीजें हैं, it's still I think 11th day. Today was 11th day. We have seen unfortunately still people are stuck. So we hope and pray that people should come out. So let us talk about this. Now here is the first question. Please read the question and then answer me. The question is, which of the following project in Telangana has recently witnessed collapse of some portion because of which workers are trapped? कौन से उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है जो तेलंगाना में लोग फंसे हुए हैं? वो कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे? अंडर विच प्रोजेक्ट दे वर वर्किंग? कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, श्रीसालम लेफ्ट बैंक कैनाल प्रोजेक्ट, सिंगूर कैनाल मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, श्रीपत सागर मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट. What is the right answer? Please tell me. I'm waiting for the response. Someone is saying A. Yes, Natasha, very good. Sri Salem Left Bank Canal Project. Sri Salem is actually a border district of Telangana and Andhra Pradesh. B is the right answer. यही सब पूछेंगे क्योंकि ये न्यूज में तो पूछेंगे. Okay. The next question is this Sri Salem Left Bank Canal Project. Yes. Yes, Natasha, right. हाँ. It is a project on which river? Godavari, Musi, Krishna, Kaveri. ये जो प्रोजेक्ट है जिसमें लोग फंसे हुए हैं तेलंगाना में, वो कौन से रिवर पर है ये प्रोजेक्ट? On which river it is? The right answer is, guess करो. Right answer is Krishna River. Yes, Natasha, very good. C is the right answer. It's on Krishna River. तो देखो तेलंगाना में कुछ प्रोमिनेंट ये 4 प्रोजेक्ट्स हैं. ये चारों मैंने ऑप्शन में दिया था यहाँ पर. All these 4 I gave you as an option. These are 4 prominent river projects in Telangana. Sri Salem Left Bank Canal Irrigation Project is on Krishna River. ठीक है. So आप देख सकते हो this इसी पर आंसर हो गया. So that is what you should know. Let's talk about Krishna River. It originates in Western Ghat near Mahabaleshwar. तो यहाँ से ऐसे कुछ चलता है ना, एंड इट गोज लाइक दिस. ठीक है. तो अगर आप देखोगे गौर से, तो दिस इज द स्टेट ऑफ तेलंगाना. ये तेलंगाना है और ये आंध्र प्रदेश है. ओके, दिस इज एपी आंध्र प्रदेश एंड दिस इज तेलंगाना. उसी के बॉर्डर पर है श्री सालम. ठीक है. सो दैट इज व्हाट यू शुड नो. श्री सालम और पे कृष्णा रिवर पे. ओके. So Telangana tunnel collapse. This is day 11 live rescue operation. Actually spelling गलत हो गया. Underway. Damaged conveyor belt likely to be operational. तो आप देख सकते हो इसकी कुछ images वगैरह भी है. In fact, people filed PIL in Telangana High Court also in this regard. So इसमें ये कि 8 workers trapped inside the Sri Salem left bank canal tunnel. ये याद रखना, ये नाम SLBC. Okay. So conveyor belt use किया जाएगा to bring the people back. एंड इसमें स्टाफ्स एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, रेलवेज के, श्रृंगेरी कोलेरी कंपनी लिमिटेड के स्टाफ्स दे आर इन्वॉल्वड इन bringing the people out. Who is the chief minister of Telangana, by the way? Telangana CM. Since we are talking about the state of Telangana, and what is the capital of Telangana? Please tell me. I'm waiting for the response. So Telangana tunnel collapse, lack of oxygen, extreme humidity and broken conveyor belt hinder final stage of rescue. Hinder मतलब रुकावट की तरफ आ रहा है. ऑक्सीजन कमी, बिकॉज अंदर में ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है, तो उससे अगर कोई जो लोग जा रहे हैं हेल्प करने के लिए उनको ही प्रॉब्लम होगा, और वहां जो लोग फंसे हुए, एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी और कन्वेयर बेल्ट जिसकी वजह से हेल्प करके निकाला जा सकता था उसमें वो भी ब्रोकन है. एंड दीज आर द प्रॉब्लम्स एंड ऑल. यस, द चीफ मिनिस्टर इज मिस्टर रेवंत रेड्डी. यस, नताशा एंड मनीष कुमार, यू बोथ आर राइट. ठीक है. एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना? ये तो पता होना चाहिए. हैदराबाद.
Yes, Natasha, very good. Hyderabad is the capital. Okay, so workers trapped under SLBC. SLBC इसको कहते हैं Sri Salam Left Bank Canal Project. Okay, this is the place where actually it happened, Domale Penta. And these are the officers, project engineer, field engineer, ये सारे लोग का नाम है जो लोग फंसे में आप देख सकते हो. And since 22nd February they are trapped. So 22 फरवरी से almost 11 दिन हो गया, they are trapped 22nd फरवरी से. So let us see, let's pray that they should come out safe. That is what is being talked about. And the rescuers began cutting the way tunnel boring machine that lies between the. ये एक मशीन है टनल बोरिंग मशीन, आपको पता होगा ये टनल जब बनाने के लिए काम आती है. So this is we have in fact taken the help of Japan also in making this tunnel boring machine to create a tunnel. ठीक है, जैसे मेट्रो वगैरह बनती है उसमें इस सब की जरूरत होती है. ठीक है, that is what you should know. On Monday, handful rat hole mining experts and specialized workers from Singeri collieries started exploring the last 40 minutes. रैट होल माइनिंग टेक्निकली जो है ना वो प्रोहिबिटेड है इंडिया में, बैंड है, सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर रखा है. रैट होल माइनिंग जो है इससे क्या होता है, माइनिंग किया जाता था स्पेशली इन द स्टेट ऑफ मेघालय, बट इट हैड अ लॉट ऑफ हार्मफुल इफेक्ट टू द वर्कर्स, दैट इज व्हाई इट वाज बैंड. लेकिन यहाँ पर इसलिए भेजा जा रहा है तो यहाँ पे तो आदमी को सेव कर रहा है, निकालना है. सो इन दैट केस रैट होल माइनिंग इज क्वाइट हेल्पफुल. इस तरह होता है जैसे मान लीजिए पहाड़ है, उसको सीधा ऐसे करके पतला सा टनल से एकदम खोदते हैं, समथिंग लाइक दिस, और खोदते जाते और यहाँ से आदमी निकाल के निकाल लेते हैं. दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज रैट होल माइनिंग. सो दे आर आल्सो ट्राइंग रैट होल माइनिंग टू ब्रिंग द पीपल बैक एंड ऑल. ठीक है, और वेंटिलेशन ट्यूब भी भेजा जा रहा है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, तो ताकि ऑक्सीजन भी जा सके वहां, है ना, अदरवाइज पीपल विल डाई दोज हु आर स्टक. दैट इज व्हाट दैट इज ना. So the ventilation tube will be fixed. The conveyor belt will also be operational. तो जो यानी ऑक्सीजन जाने का है उसका भी रास्ता बना दिया जाएगा, कन्वेयर बेल्ट भी बना दिया जाएगा ताकि लोग आ सके. वंस द पार्ट ऑफ टीबीएम आर रिमूव्ड, तो टनल बोरिंग मशीन है उसका कुछ हिस्सा फंसा हुआ उसको रिमूव कर दिया जाएगा, उसके बाद दिस थिंग्स कैन बी डन. दैट इज व्हाट वन ऑफ द सीनियर ऑफिशियल टोल्ड इंडियन एक्सप्रेस. अब देखो पेटिशन किया था, PIL was filed about SLBC tunnel issue, but the तेलंगाना हाई कोर्ट they disposed of. मतलब लोगों ने पेटिशन डाला था कि पास अ डायरेक्शन टू द स्टेट एंड ऑल, बट एडवोकेट जनरल Mr. A. Sudarshan Reddy convinced the judiciary or the Telangana High Court that governments are taking the step to bring the people back. And that is why abhi filhal ke liye the Telangana High Court has not passed any order in this regard. Now, I have a question. Since we are talking about Advocate General, please tell me which article of the Constitution talks about Advocate General. है ना, मैंने बताया था Attorney General is the senior most lawyer of the central government. Advocate General is the senior most lawyer of स्टेट गवर्नमेंट, है ना. स्टेट गवर्नमेंट के सबसे सीनियर मोस्ट लॉयर होते हैं, उनको एडवोकेट जनरल कहते हैं. हु इज द एडवोकेट जनरल? आई मीन व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट दैट? द राइट आंसर इज, देखो अटॉर्नी जनरल के लिए 76 है ना, और एडवोकेट जनरल के लिए बी. यस नताशा, वेरी गुड. 165 टॉक्स अबाउट इट, है ना, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट. इसी तरह अगर पढ़ते जाओगे ना तो धीरे धीरे लर्न करते जाओगे. इफ यू लर्न एवरी डे, धीरे धीरे, सो यू कीप ऑन लर्निंग एंड ऑल. सो इफ यू कीप ऑन वाचिंग द क्लासेस एवरी डे यू विल लर्न, है ना. सो ये तेलंगाना है, यहाँ पर बॉर्डर में, है ना, मैंने आपको दिखाया ये जो बॉर्डर है यहीं पे श्री सालम, ये हैदराबाद कैपिटल है, ये तेलंगाना स्टेट हो गया, ट्रायंगल सा. एंड लेट मी राइट इट क्लियरली, दिस इज द स्टेट ऑफ तेलंगाना, है ना, और ये नीचे वाला आंध्र प्रदेश है. ठीक है, ये तेलंगाना है, ये हैदराबाद कैपिटल है, और यहीं पर बॉर्डर में श्री साइलम प्रोजेक्ट जो है, वेयर एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली दिस इंसिडेंट हैपेंड. देखो बॉर्डरिंग एरिया पे ये हैदराबाद है ना. श्री साइलम इज अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वगैरह से रिलेटेड रिसर्च हो रहा होगा, है ना. ऑन कृष्णा रिवर बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना ऑन श्री साइलम डैम. ठीक है, एस्टैब्लिश्ड. ये डैम जो 1960s वगैरह में बना था, द डैम गॉट कंप्लीटेड इन 1981. सो दिस यू शुड बी नोइंग. यही सब पूछा सकता है. फिर ये पूछा सकता है कि श्री साइलम डैम को ऑफिशियल नाम क्या है? कैन एनीवन टेल मी? इट इज नेम्ड आफ्टर एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. So Sri Salem project we are talking about. So there's a dam called as Sri Salem Dam. So this dam is named after a former president of India. What is his name? कोई बता सकता है? 12 gates है, 145 मीटर लॉन्ग है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है. मींस हाइड्रो मींस वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, है ना, दैट्स द आइडिया.
So what is the name of the former president? So the right answer is the dam is officially called as Neelam Sanjeeva Reddy project. ठीक है. Or he had earlier served as the president of India from 1977 to 1982. ठीक है. Yes, Natasha, very good. Neelam Sanjeeva Reddy, great. So you know this. So हाँ, deputy CMB रह चुके थे आंध्र प्रदेश के, 2 time speaker of Lok Sabha भी रह चुके थे, union minister and all. So he had served at different position, and that is why Sri Salem Dam is named after him. ठीक है. It is the second largest capacity working hydroelectric station. So second largest hydroelectric station है, ठीक है. So that is also what you should be knowing. Now I have discussed all these things, और मैंने ये सब पढ़ा दिया है. Now I'll have a question, and you have to answer me. National Disaster Management Authority is a constitutional body, statutory body, made with presidential order, none of the above. I have told you in the beginning of the class. मैंने क्लास के शुरुआत में पढ़ाया था, इसीलिए आपको पता होना चाहिए. नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए. प्लीज टेल मी. अच्छा, ऑस्कर वाली क्लास मैंने लिया था कल. प्लीज वॉच इट. yesterday I have taken Oscar Awards 2025 class. If you have not watched it, please go in the live section and watch it. NDMA, please tell me, guys. I mean, I'm expecting you all to answer because I've already taught in this class. Statutory body. Yes, Natasha, very good. Statutory body means made with the result of a parliamentary law. Parliament passed an act. Yes, Manish Kumar, you are also right. B is the right answer to this question. Now the question is, National Disaster Management Authority is formed under which law? Epidemic Disease Act 1897, Disaster Management Act 2005, NDMA Act, NDRF Act. What is the right answer? Please tell me what is the right answer. I'm waiting. अच्छा, आपको पता है जब कोविड हुआ था ना, so when the COVID happened, these two laws were invoked. जब कोविड लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन जैसे फरवरी मार्च के आसपास हुआ था ना, मार्च 2020 में. So both these laws were invoked. Yes, Manish Kumar, you are right. Disaster Management Act. Actually ये दोनों कोई लॉ नहीं है. Disaster Management Act के अंदर में NDMA आता है, NDRF आता है. All these comes here. ठीक है. So we do not have NDMA Act, so it is a Disaster Management Act and Epidemic Disease Act. ये दोनों तो इसका जो आंसर है वो बी होगा. And you should remember these two laws were invoked during the time of when the COVID-19 was there and all. एपिडेमिक डिजीज एक्ट क्यों? बिकॉज वही पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे रेगुलेशंस लगाए जा रहे थे ना. लॉकडाउन, बहुत सारे जगह लोकल एरियाज में कर्फ्यूज एंड ऑल. सो जितने जोन्स डिक्लेयर किया जा रहे थे, ऑल वेर डिक्लेयर्ड अंडर एपिडेमिक डिजीज एक्ट. नाउ इट हैज बीन रिवोक्ड. ये दोनों एक्ट को रिवोक कर दिया गया, मतलब स्पेशली इन्फोर्स किया गया था. एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में नेचुरल डिजास्टर डिक्लेयर किया जाता है एक्सेट्रा, दैट अ पर्टिकुलर डिजास्टर इज डिक्लेयर्ड, सो दैट इज आल्सो डन अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट. ठीक है. सो बी इज द राइट आंसर. नाउ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अंडर ही में सब कुछ आता है. एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है ना, जो ऑरेंज कलर का ड्रेस वाले थे, है ना, मैंने आपको दिखाया भी था फ्यू मिनट्स बैक. वी हैड डिस्कस्ड. सो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 वाज पास्ड एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट? केदारनाथ GLOF, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड. ये 2013 में हुआ था. आपने सुना होगा. इसके बाद एक देयर वाज अ फिल्म मेड बाय सुशांत सिंह, मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत ऑन दिस. देन सुनामी हुआ था, ये 2004 दिसंबर के आसपास हुआ था, है ना. देन अवलांच इन सिक्किम, ये तो अभी आया था 2023 वगैरह में, जो लोहनाक लेक था. रिसेंटली वी हैड सीन दैट होल माइनिंग इंसिडेंट इन मेघालय. ये दो कई बार हो चुका है. दिस इज एक्चुअली बैंड इन सुप्रीम बाय द सुप्रीम कोर्ट, बट दैट आल्सो हैपेंड अर्लियर आल्सो फ्यू इयर्स बैक. तो इसमें आपको ये बताना है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कौन से इंसिडेंट के बाद बनाया गया था. एंड विद द हेल्प ऑफ कॉमन सेंस नाउ यू कैन आंसर. मैंने आपको ईयर वगैरह सब बता दिया. अब देखो यहाँ पे लिखा 2005. तो 2005 से जस्ट पहले कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा, है ना. सुनामी हैपेंड इन 2004. सुनामी इन द इंडियन ओशन. यस नताशा, वेरी गुड. अच्छा, कोई बता सकता है सुनामी इज अ जापानीज वर्ड व्हिच मींस व्हाट? इसका लिटरल मीनिंग क्या है?
यस नताशा, मनीष कुमार, यू बोथ राइट। सो सुनामी हुआ था 26 दिसंबर 2004 को। ये ऐसे सुमात्रा के आसपास आया था। यहाँ पे ना देखो, ये इंडिया है, ये सुमात्रा है, सुमात्रा ऑफ इंडोनेशिया। यहीं पर ऐसे प्रोविंस है ACEH, यहीं पर आया था। सुनामी हैपन एंड इट इम्पैक्टेड इंडिया, अंडमान निकोबार, श्रीलंका, ऑल दीज रीजन्स। ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू शुड नो। और उसी के बाद फिर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाज ब्रॉट। ठीक है, उसके बाद NDMA वगैरह बनाया गया था, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। सुनामी का मतलब होता है स्पोर्ट एंड मेमी मींस वेव। ग्रेट मनीष कुमार, वेरी गुड। Natasha, very good. Harbor waves. Why it is called as harbor waves? यानी समुद्री तट पर डैमेज करता है, दूर में नहीं डैमेज करता है। मतलब बताता हूं, देखो जैसे मान लो ये समुद्री तट है, लेट मी राइट इट क्लियरली। सो दिस इज लैंड। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ये वाटर है, समुद्र है, ओशन। ठीक है, और यहां पर आपकी शिप खड़ी है समुद्र के किनारे, रेड वाली, दिस इज योर शिप। ओके, नाउ आपको इंफॉर्मेशन मिलती है कि यहां से सुनामी आ रही है, यू गॉट टू नो। सो शिप को क्या करना चाहिए? इस शिप को इधर भाग जाना चाहिए, पानी के अंदर। It should run inside the water because the tsunami damages coastal areas, harbor region. तो अगर शिप यहां पर आ जाएगा तो इसके नीचे से सुनामी चला जाएगा, कुछ नहीं होगा। ओके, यू गॉट इट। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, मान लीजिए आपकी शिप यहां पर है। ठीक है, हियर इज योर शिप। ठीक है, और सुनामी मान लीजिए नीचे से आया, तो सुनामी आके यहां से क्रॉस करके चला जाएगा ना, इट विल नॉट डैमेज द शिप, इट विल नॉट इम्पैक्ट द शिप इफ द सुनामी वाटर गोज इनसाइड बिलो द शिप। लेकिन अगर शिप समुद्री तट पर खड़ी है, देन इट विल डैमेज द शिप। If it is sitting, if the ship is standing just on the harbor, then it can destroy the ship. तो हार्बर को डैमेज करता है। बीच में पानी अगर है, बीच में शिप है, नीचे से चला जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, नथिंग विल हैपन। दिस इज द क्वालिटी ऑफ सुनामी। इसीलिए इसको कहते हैं सुनामी, हार्बर वेव्स। इट डैमेज द हार्बर। यू गॉट इट? It does not affect the ship if it is in the middle of the water. It can go inside the below it and it will not harm the ship. इसलिए कहा जाता है अगर समुद्री तट पर है, यहाँ पे शिप खड़ी समुद्री तट पर और यहाँ से आ रहा है, तो शिप को चाहिए कि पानी की और डीप चला जाए। It should not stand on the coast. It should go deep inside the water. It will not damage. It will not impact. Is it clear? You got it? Why it is called as harbor waves? I hope it is clear. Is it clear, guys? Yes or no? अच्छा, जिन लोगों ने ये क्लास नहीं देखी, फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू अवर चैनल, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज वॉच दिस क्लास। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑस्कर अवार्ड्स, यस्टरडे आई हैड टेकन द क्लास। ये जरूर देखिएगा एंड मेक नोट्स आउट ऑफ इट, बिकॉज इससे क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। ट्रस्ट मी, आई हैव सीन इन डिफरेंट एग्जाम्स क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड। तो आप जो भी नोट्स में करंट अफेयर्स जीके बनाते हो, उसमें शॉर्ट नोट्स में लिख लेना। एटलीस्ट 4 चीज याद रख लेना इसका: बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म of the 97th Academy Awards, the Oscar Awards. ये चारों याद रख लीजिएगा. That would be very very helpful. So this is all about today's class. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.